हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा दीक्षा ऐप का कोर्स है ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो ये हुआ था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ virtual लैब इन टीचिंग लर्निंग। ठीक है, इसकी जो क्विज आई थी उन्हीं क्विज के आज हम आंसर लेके आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पार्ट्स में क्विज हुई है, क्विज 1, क्विज 2 एंड क्विज 3 में। इसके सभी प्रेजेंटेशन के लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप यहाँ से देख के वीडियो को वॉच कर सकते हैं। 3 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, 70% मार्क्स इसमें कंप्लीट करने होते हैं। जो स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट है लैंग्वेज विचुअल लैब एज ए टीचिंग लर्निंग टूल्स फॉर ए लैंग्वेज, इसका और विचुअल लैब एज ए टीचिंग लर्निंग टूल्स फॉर फिजिक्स, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी की वीडियोस के भी मिल जाएंगे। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इसका थर्ड वाला पार्ट, विचुअल लैब एज ए टीचिंग लर्निंग टूल्स फॉर कंप्यूटर साइंस। जब हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं। इसके बाद हमें इस कोर्स को ज्वाइन करना होता है लिंक पे क्लिक करने के बाद। ठीक है, कोर्स को ज्वाइन करने के बाद सभी मॉड्यूल्स को आपको कंप्लीट करना होगा। लास्ट में आपको असेसमेंट को कंप्लीट करना होता है। आज हम इसी असेसमेंट के क्वेश्चंस को लेके आए हैं। इस क्विज में जो हमारा पहला क्वेश्चन है असेसमेंट का, वो है विचुअल लैब डू नॉट हेल्प टीचर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे करेक्ट आंसर एक्सक्लूडिंग फिजिकल लैब इन स्कूल। सेकंड क्वेश्चन है विचुअल लैब्स आर नॉन एज द कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, करेक्ट आंसर है यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not NEP 2022-20 recommendation for online and digital education, correct answer है physical infrastructures। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is not true regarding the virtual labs, correct answer they replace physical lab। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर the significance of virtual labs in computer science learning, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what features of virtual labs helps students improve their debugging skills, correct answer है step by step एजुकेशन एंड विजुअलाइजेशन ऑफ कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दीक्षा virtual लैब लॉन्च ऑन, करेक्ट आंसर 29 जुलाई 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज द सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट इन virtual labs ऑफर द फॉर असेसमेंट्स, करेक्ट आंसर प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपेरिमेंटेशन विदाउट द रिस्क ऑफ ए affecting real system। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू NEP 2020 guidelines, what is the primary objective of introducing virtual labs in the education system, correct answer है equitable access to quality practical education। नेक्स्ट क्वेश्चन है what distinctive advantage do virtual labs offer in facilitating the comparisons and practical application of data structure in computer science, correct answer student can visualize and manipulate data structure interactively। next question है हमारा यहाँ पर the following feature best describe the virtual labs on the diksha platform, correct answer provide the interactive sessions with step by step guidance and enabling hand on learning without physical labs। नेक्स्ट क्वेश्चन है which labs help learners in following way, correct answer perform experiment multiple times without the consuming chemicals। next question है which option in the virtual labs interface help you to run a digital simulation, correct answer execute। next question है which of the following can be used to assess student performance in virtual lab, correct answer real time coding challenge and quiz। next question है which lab he connected available from grade, correct answer 6 to 12। next question the virtual labs are based on the idea that, correct answer lab experiment can be thought using the internet and can access anytime anywhere। next question virtual labs enhance the flexibility in learning the computer science student, correct answer can access lab anytime from anywhere। next question and the following is note the features of virtual lab disseminated through diksha, correct answer restrict to learning basic concept only। next question है the correct way to check if a number is even in python, correct answer if किसी नंबर को हम 2 से रिमाइंडर करते हैं परसेंटेज का साइन लगा के और फल में 0 आता है वो हमारा इवन नंबर होता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। next question how does a pre-lab session in a virtual lab set
the stage for successful experimentation and ensure students are well prepared for hands-on learning. Correct answer to provide the theoretical background and familiarize user with lab procedures. ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। जो बाकी के जो इसकी क्विज उसकी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।